ये न्याय का मंदिर आप बंद करें। दिस इज जस्ट अ कोर्ट ऑफ लॉ, अंडरस्टैंड दिस। ना यहाँ बैठा हुआ आदमी भगवान नहीं है, ये भी एक आदमी है, इंसान है, मर जाएगा एक दिन। तो ये भावुकता वाली बात आप मत करिए। ठीक है। और सर न्यायालय जो है वो न्याय का मंदिर है और न्यायाधीश don't go into listen, if you've done LLB, don't go into dramatics and do not go into emotional arguments. बिल्कुल, लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर कोई ऐसा जजमेंट हो। मैं कभी प्रॉमिस नहीं करता। जब आदमी आके खड़ा हो जाता है जिसको ना कानून की कोई जानकारी है ना जो वकालत करता है, मान लीजिए किसी को जब कैंसर की बीमारी हो तो खुद घर में बैठ के इलाज करता है क्या? नहीं। तो वकालत में क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई भी आके बहस कर लेगा? एक वकील बनने के लिए 5 साल वो जो है लॉ कॉलेज में वो मेहनत करता है, उसके बाद 5-7 साल मिनिमम एक सीनियर के अंडर जो है काम करता है, तब जाके उसमें जो है कैपेबिलिटी आती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वकील से बेटर बहस कर सकते हैं, ऐसा उदाहरण है। देख लेते, आज की तारीख में तो नहीं होगा। और मेरा वक्त बंसाया करिए। I will release it from a board. Let it go before another bench. You realize the kind of damage you're doing to your father's case? There's no one to appear from the side of the state. We'll give you a date only. सर स्टेट के लिए मैसेज गया है, अगर कोर्ट का डेट लगता है तो स्टेट की साइड भी मैसेज जाता है। और सर न्यायालय जो है वो न्याय का मंदिर है और न्यायाधीश don't go into listen, if you've done LLB, don't go into dramatics and do not go into emotional arguments. बिल्कुल सर। Today the other side is not present. I can't hear you, man. I can't hear you, man. Simple. अच्छा सर, एक बात कहना है मुझे। मैं नेक्स्ट टाइम अपीयर होऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आप जैसे आज मैं कुछ नहीं देखूंगा क्योंकि दूसरा तरफ नहीं है, मगर इसलिए क्योंकि आप पेटिशनर इन पर्सन अपीयर हो रहे हैं, आपके लिए मैं आई गिव यू अ शॉर्ट डेट। That is all. I'll keep it on top of the list. मतलब अगली बार मैं सस्पेंशन लगाऊं तो पता चला कि वो खारिज हो जाए, इससे अच्छा है आपने लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर कोई ऐसा जजमेंट हो। मैं कभी प्रॉमिस नहीं करता। हाँ, मतलब मेरे don't make such arguments. This is the problem. जब आदमी आके खड़ा हो जाता है जिसको ना कानून की कोई जानकारी है ना जो वकालत करता है, आपको मान लीजिए किसी को जब कैंसर की बीमारी हो तो खुद घर में बैठ के इलाज करता है क्या? नहीं। तो वकालत में क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई भी आके बहस कर लेगा? एक वकील बनने के लिए 5 साल वो जो है लॉ कॉलेज में वो मेहनत करता है, उसके बाद 5-7 साल मिनिमम एक सीनियर के अंडर जो है काम करता है, तब जाके उसमें जो है कैपेबिलिटी आती है। सर आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वकील से बेटर बहस कर सकते हैं, ऐसा उदाहरण है। देख लेते, आज की तारीख में तो नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन ये देखिए, यहाँ पर इस स्टेज पर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में मत बताइए, जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, एक हमारे और मेरा वक्त बंसाया करिए। आज के तारीख में जब आपको बता दिया मैं कि सुनवाई नहीं हो सकती है, किस बात की बहस कर रहे हैं? Request one small. Sir, what is this? This is big. One small request. You can make that request, but unfortunately, this particular case is becoming a circus. I will release it from a board. Let it go before another bench. I will release it finally. You take your luck before any other bench then. Just one small request, sir. Yes, please go ahead. I will request that you hear all these matters. Okay, adjourn my case to the end of the list and give me a few minutes after this. Not after you finish all the. I'm not going to hear your matter. Where is the other side? Where is the other side? Today there's a strike. You take up the matter with the bar council. Look, I certainly don't agree with the cost that has been given for the purpose of the strike. Take 1 second to take a. Please tell me. सर अगर आपको बोर्ड चेंज करना है तो आप सर हाँ आपको then you say that you don't have faith in the board, then I will change it. No. आप अपने आप ही कर रहे थे, my lord. No, but this is becoming. I'm saying that is unable. I told you on several occasions that this has to be taken to the Supreme Court. My hands are blocked. And how many applications have you dismissed? My lord, now, my lord, we are before my lord with an appeal. We are not before my lord for a bail application. For the appeal, can't hear it right now because it's a 2022 appeal. It's a 2022 appeal. It will come up on its own course. मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर आज फैक्ट सुन लेंगे, डेट भी बढ़ा देंगे, तो अगले फैक्ट पर टाइम नहीं लगेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टाइम ने हर वकील यही बोलता कि साहब मेरे केस में टाइम नहीं लगेगा। मैं कुछ keep it at the end of the list. Here everybody out. And luckily I can't sit specifically for you after 4:30. I can hear small matters like correction of orders. 4:30 बात क्या है? करेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, जहां कॉम्प्रोमाइज हो गई है वहां पर ऑर्डर पास करना है। 1 मिनट रुक जाइए, आप कुछ नहीं कहेंगे।
These are the matters that I keep after 4:30. Then the question arises, what is so special about your case that I should hear it after court hours on merits and decide an appeal? No, after hearing to all the people who are sitting, I'm No, not. no, saying not 4:30. today, not today. Today, of course, I'm just going to adjourn it. I'll give you an early date. Because luckily there are no advocates here, so we have some time. What is it that you right now want? What is it that you're asking for? See, this Your is- last application was also dismissed. Yes, my lord. Then And that was for suspension. Now what are you wanting? Now the appeal is before my lord. And You want me to hear the appeal? Yes, and Have then you in filed that an appeal we can application? hear the facts of the case. Have you filed an application for early hearing? या सर Which is that application? एप्लीकेशन नंबर आपको बता रहा हूँ हाँ। सर, वेट कीजिए आप। एप्लीकेशन नंबर है आईए नंबर 4996/2023। सर मेरी 6 आईए एक मिनट। आइए, अर्ली हियरिंग का कौन सा है? 4996 ऑफ एक ये भी मिनट। दिखा दें और ले लें। 499 4996/23। निकालना जरा इसमें से। इसमें लिखिए, heard on IA number so and so. सर Wait a minute, don't disturb me right now. Heard on IA number 4996 of 2023, which is an application for early hearing of this case, full stop. The application for suspension of sentence of these appellants were dismissed on merits by an elaborate order passed on 19/12/2022. Full stop. The petitioners thereafter have not gone to the Supreme Court in order to get a suspension and bail in this case. Full stop. Thereafter, another application was moved for suspension of sentence, which was again dismissed on 16/12/2023 as this court felt its hands were tied by the earlier order of the coordinate bench, which dismissed the application for suspension by an elaborate order. Full stop. Full stop. As the appellants are all senior citizens, more than 60 years, comma, and the sentence that has been imposed upon them, the maximum sentence that has been imposed upon them is of 3 years, comma. As an exception, comma, list this case for final hearing in the week commencing 12/6. My lord, मैं बोल सर एक मेरी आईए और है 5108 51? 51 08/23। ये निकालना कौन सा है? 5108 जजमेंट है जो पत्रचार दिखाने एक साथ याद दिलाऊं पत्रचार वो डेट को क्यों खराब करती है? तो 6 मंथ बता रहा है। 17/4 दाखिल वाला है दिखाना है तो पेपर है इधर पेपर नहीं है, उन्हें मालूम है। बोलो लास्ट डेट का जजमेंट, लास्ट डेट का जजमेंट। 5108 what is this for? सर ये इसलिए है कि इन व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है जो एप्लीकेंट, ना केवल वकील बल्कि जो अपीलार्थी है उनके भी समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया जाता है कानून की नज़र में तो वो ऑर्डर ही नहीं है। We will hear this also along with your final hearing के टाइम पे सुनेंगे नहीं इसको। सर फाइनल हियरिंग नहीं, क्योंकि सस्पेंशन से रिलेटेड सस्पेंशन अब मैं नहीं सुनूंगा। I made it very clear, I will dismiss it. सर मतलब 16 तारीख ये का क्या जो है? order विशेष है, न्यायालय सो एंड सो अभिलाषी है, मैंने अपूर्णता क्षति के अन्याय बचा। What is all these applications? What are you filing? Do you realize the kind of damage you're doing to your father's case? You think you're too clever by half, but you're going to damage it irreparably. इस बात को समझता that's हूँ, it. लेकिन सर That's it. I pass the orders. You should consider yourself lucky कि 2022 का appeal is coming up for final hearing this year itself. वरना पड़े रहता, this appeal would have
become infructuous, or 1.5 years the person would have spent in jail and then would have come out. Should consider it just a lucky that it's been filed. It's only looking at their age. I have done with you, ठीक है Mr. सर, डेट जो आपका था वो 17/1 दे था दिया। लास्ट ऑर्डर में, उसको डेट को अब वो नहीं 17/1 का नहीं नहीं, सर, 17/4 का 17/4 का नहीं 17/4 का नहीं होगा, नहीं, because now आप not for fine hearing. Now you you have called it upon yourself. You have called it upon yourself. Now this is for final hearing of the appeal itself. Let it come up. My lord, Yes. if you just kindly have a look at the order, last order. One Mr. second. Counsel, I am done with. I will get rise and then go on to my chamber. There are some more matters. I am not going to listen to it today. I fixed it up for final hearing. In the week commencing, कब का है My ये? lord, 12/6 upon reopening of In the court. in the last order, my lord, if you see, it was the same thing is written, but it's for 17 April. Just have a look at the last Then order. how did this matter come up today? I will explain. I will explain. No, no. Give me Just, one just. minute. I will just explain to you, my lord. दिखाओ वो जो certified copy दिखाओ. My lord, we had made an. Why don't you apply for legal aid? नहीं सर, लीगल My lord, I am. Now your father may have been out by now if you had gone for legal aid. सर लीगल एड पे गए थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, लीगल एड मिलता है। सर सुनिए तो बात, आप हमारी प्रॉब्लम समझेंगे। आप बताइए न्याय बताइए का मंदिर है, एक मिनट दो, ये न्याय का मंदिर आप बंद करें। दिस इज जस्ट अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। ना यहाँ बैठा हुआ आदमी भगवान नहीं है, ठीक है, ये भी एक आदमी है, इंसान है, मर जाएगा एक दिन। ठीक है, तो ये भावुकता वाली बात आप मत करिए। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये हुआ, जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपके ये सारी ट्रांसलेशन चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से हम केस का कुछ नहीं, ये आएगा तो ये 4-5 हम सबसे पहले इसको एडमिट करेंगे, फिर हमारी कमेटी होती है, कमेटी डिसाइड करेगी कि ये कब आना है, फिर जब हियरिंग पे आएगा तो नोटिस होगा। तो उन्होंने लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता दिया। अब उस प्रोसीजर के कंप्लीट होने में काफी टाइम। अच्छा ठीक है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा सारे आप ट्रांसलेट करा के लाइए जो हिंदी में, क्योंकि यहाँ टोटल इवन एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सारे इंग्लिश में होंगे, तभी हम इसके आगे प्रोसीजर कर पाएंगे। और हमारे हाथ में डिसाइड नहीं है कि एक क्या कहते हैं जो यहाँ पर मुफ्त में ट्रांसलेशन हो रहा है, मालूम है आपको, फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ मैं वहाँ गया हुआ था, फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसलेशन हो रहा है। सारी सुविधाएं जो है सरकार ने और कोर्ट ने मिलकर मुवक्किलों को दी है, मगर आपको अपनी अकल लगानी है अलग से। हाँ बताइए आप क्या कहते हैं? The co-accused has gone to the Supreme Court and the judgment is that issue notice to the opposite side and then they will have to give a reply. You have, the opening is already there. You can file your SLP and say link it with that matter. And Yeah, link all it this, with that all this matter. is, you take time, my lord, just have a look at I'm the not last, going to have a look. the last order, my lord. It is 17-4. Mister, you are at least an advocate. I am so told by none other than yourself and a rather senior person. सर मैं दोबारा अपीयर नहीं होता, इसलिए केवल अपीयर हुआ हूँ। उसका केवल एक ये क्या कारण है? इसका है कि क्या? जब मैंने एडवोकेट को दिखाया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, काफ़ी एडवोकेट से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा इसमें ऐसे तथ्य अवेलेबल हैं और उसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन से जो खुद कहते हैं कि फैक्ट्स पर सुना जा सकता है। एक बार सर से रिक्वेस्ट करके, अब ये उन्होंने वो सारी चीज़ें देखा, बोले इरिटेट हो गए हैं। दो बार जाकर के दिखा दीजिए। देख लिया मैंने। सर ये 30 नहीं देखूंगा। अभी मेरे हाथ बंदे हैं, 16 थी, मेरे ऊपर सवाल उठ जाएंगे। आपने दूसरा, आपका सेकंड जो लास्ट ऑर्डर था, आपने मेरिट्स में खारिज कर दिया। अब क्या बात रही? तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ जो है प्रश्न उठेगा, जब आपने पहले वाला जो है डिसमिस कर दिया। 2 एप्लीकेशंस मेरिट्स में डिसमिस हुए, तीसरा क्यों इंटरटेन किया? सर हम लोग आज यहाँ क्यों आए, आपने सवाल किया, उसका मेरा उत्तर सुनिए जी बता दीजिए। हम लोग चीफ जस्टिस वो ग्वालियर आए थे कुछ दिन पहले। हाँ। तो हम उनके अपीयर हुए थे उनके सामने। हमने कहा कि कौन CJI अपीयर हो, चीफ जस्टिस अपीयर? चीफ जस्टिस हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाँ जी। उनके सामने आप अपीयर हुए थे। हाँ जी तो बताइए। हमने उनसे प्रार्थना की थी कि इस कोर्ट को ये पावर नहीं है कि अपना जो मेरिट्स पे किया हुआ केस है, दैट यू विल डिसमिस दिस केस ऑन मेरिट्स, वंस इट इज डिसमिस्ड यू विल रीहियर इट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर piece of law, kindly constitute a larger bench, and he promised me that he will do it. Okay. Then yesterday I was in Jabalpur just to remind him that he has a lot of work and he may forget. So he said, no, I 100% promise you that I will form a larger bench. Let him. Okay. Let the larger what bench happened is, instead of forming the larger bench, the person under him put up this matter today.
Otherwise, my lord has promised me 17.4 Don't proposal say, list. don't make, Kindly see the order, my lord. don't make submissions which are not But borne the on order, record. the order speaks, my lord. Just have a look at the order. दिखा दीजिए वो वाला order. The last order, my lord. Only one line order it is. You are creating complications for yourself. Where there was an earlier date, you get it listed. God knows how this is. No, come I up. did not get Whom it all you have listed, my been- lord. I went to कैसे Jabalpur list only हुआ to ये? set up a bench. हाँ 17/4 के लिए पहले से ऑर्डर हुआ है. लिस्ट ऑन द डेट. डेट कहाँ से कोई ऑर्डर है क्या? कोई रिटन ऑर्डर है क्या? कुछ मेंशन मेमो नहीं है. Ridiculous. इसको लिख दीजिए. इसमें लिखिए. Nothing needs to be done in this case right now. List on 17/4/2023, which is the date assigned, while order dated 17/3/23. बस ठीक. उसको बाकी वाला date. My lord, one word, that word final hearing. No. Because it is not there in that order. Your application has been filed after that order was passed for final hearing. So it will be decided on that date. What is the date for final hearing? Yes, next case दिखा दो. My lord, if my lord feels after the end of the day, I will sit here. There Kindly is call no me. end of the day. Because The matter finishes and I'm going up. I'm rising from this. I'm not going. Why should I? Or what do you propose to do at the end of the day? My lord, there are certain judgments. Is the other side there? You are a lawyer. What is the first principle of natural But justice? the- What is the first principle of natural The justice? justice has to be done. Both No. sides have to be present. Audi alterum partum. Here the other side, here both the sides. Is the other side there to be making the submissions today? On what basis do I this My thing? lord, if he doesn't come for a year, Well, too bad. can I be punished? Yeah, no, you have, look, the problem is you're not going for professional help at all. And Lord, from I what am I a- I hear am a of you, lawyer, you don't appear to registered be and- people who can't take My professional lord, help. I am a lawyer registered in 1984, my lord. You may have been, but pardon me for saying this, nothing personal against you, but it doesn't appear to me that you're making submissions of a lawyer who has been registered in 1984, with the utmost respect to you. It doesn't so appear. You're making this case going from bad to worse. You're complicating it for your own client. Anyway, that's up to your choice. Please take some professional My help. lord, That is all I can say. In the last long order for 1 year, my lord listened to me. There was a gap for lunch. After that also, my lord listened to me. And in that, my lord said, if you bring something concrete, I will give I you am a not bill. going to hear you today. I've given that date. It's impossible. Gentlemen, please step aside now and let me hear the other matters. Kindly step aside the other matters. I'm not going to hear any other. After this, I've given the date. Come on that date.